Okay, so now we are going to start our topic. Last we have discussed about the importance of bacteria. Yes, we have discussed different diseases in the plants we have discussed, and different diseases in the animals we have discussed. Okay, so till here the topic of fungus is complete. Now we are going to the next topic, that is algae. Okay, algae is basically a very diverse group of autotrophic living organisms. Autotrophic means they can make their own food. Diverse group means it has been a lot of organism present in them. It means it is a variety of organism, and they are autotrophic. It's basically, some of them are single cellular, and some of them are multicellular. Okay, they can be very big in size as well, and they can be very smaller in size, microscopic in size as well. So they are basically the group of diverse organisms, okay, which have variety of species present in them. According to the scheme of classification which we have studied previously in chapter number 3, alga is placed in kingdom Protoctista. We know that alga is being placed in the group in which there is no animal, no plant, no fungus is present. So it is in a separate group. Okay, maybe it can be unicellular, it can be multicellular, but alga is having a separate group in which they are placed. The classification of alga is basically on the pigments present in their body. Some of them are green, other are golden, okay, other are red alga. So they are being classified on the basis of the pigments they have. Green alga, golden brown alga, red alga. So they have different kinds of alga based on the pigments they have. Okay, then we are having another thing. The most important factor about alga is they have chlorophyll in them. Let's suppose if an alga is green, brown, or red in color, still they will be having the green pigment present in them. They will be having the chlorophyll present in them, and that chlorophyll will help them so that they can make their own food. Okay, so alga is their group of organisms which is unicellular as well as multicellular. They are being classified on the basis of the pigments present in them, and they also contain chlorophyll in their body. Okay, the example of alga are Chlamydomonas, Spirogyra, and Alga. The first two, Chlamydomonas and Spirogyra, are important. We will study them in detail as well, and the diagrams of these two are also very much important. Okay, so only the diagram of Chlamydomonas you have to draw, and you will get 5 marks for that. If they ask you for the properties as well, then you have to write the properties as well. Otherwise, if they do not ask for the properties, you just need to draw the diagram and you will get 5 marks. So let's see about Chlamydomonas. Chlamydomonas is basically a freshwater alga. It can be found in still stagnant water, which is normally pollutant, having rich organic compounds in them. The polluted water normally having a lots of organic compounds in them. So at that polluted, stagnant, still water, Chlamydomonas will grow. And you will see in the surface of that water that the green color of Chlamydomonas are being spread. Okay, they are unicellular, they are eukaryotic, and they are motile. You know, unicellular are the organism which has one cell in their body. Eukaryotic are those cells who has a true nucleus present in their body. And motile are those organisms which can move from one place to another. Okay, the organism which can move from one place to another, they are known as motile organisms. Okay, the shape of Chlamydomonas may be spherical, mean round, oval shape like an egg, pear shape जैसे नाशपाती होती है, with pointed anterior end. Anterior mean the upper end is pointed out. Okay, so it is spherical over pear shape with pointed anterior end. You can see in the diagram, somewhere you will see it's spherical, round, somewhere you will see it's oval in shape like an egg, and somewhere you will see just like the shape of a pear. Okay, so and the upper end, the interior end will be pointed out. Okay, the structure, the cell wall is it has a cell wall. The outer layer is called the cell wall. It has a cell membrane. The second layer is called the cell membrane. Then it has the cytoplasm. Inside the cell membrane, it has a cytoplasm because it is a complete cell. Okay, it has two flagella. Flagella are basically the antenna-like structures which help them in the movement. Okay, they have a contractile vacuole in them. The contractile vacuole do what? It helps in the process of excretion. Okay, it has a cup-shaped chloroplast.
you will see the chloroplast inside it is like a cup. Okay, the green pigment is like a cup, and that green pigment help them in the process of making food. Okay, it has an eye spot as well. What does the eye spot do? It is sensitive to light. So wherever there is a light, the eye spot help them to detect that light, and the Chlamydomonas move or swim in the water towards the light. Okay, and it has a pyrenoid. Pyrenoid is basically a starch producing body. It produces starch. Let's see the diagram of Chlamydomonas. This is the diagram of Chlamydomonas. Okay, so here let's start from here. These are the flagella. These two are the flagella. With the help of these two flagella, Chlamydomonas the Chlamydomonas swim in the water. So it can swim in the water from the place where it needs to go to another place, like for sunlight, so they can move in the water. They can swim in the water. You can see this place, head. This head is also known as apical papilla. This is known as apical papilla. It normally helps the Chlamydomonas in the process of reproduction as well. The head of the apical papilla, the pointed end, which we discussed about, the pointed end. This pointed end is apical papilla, okay, or head. Then let's see the cell wall. The outer layer, this outer layer present in the cell is called cell wall. The outer layer is the cell wall. Inside the outer layer, we are having a second layer, is the cell membrane. Okay, and then this place, this whole place is known as cytoplasm. This is known as cytoplasm. Okay, this is the eye spot. See here, this is the eye spot. This eye spot is light sensitive. So whenever it needs to move to light, this eye spot detect the light, and then with the help of flagella, they move towards the light. This is the cup-shaped chloroplast, this green color. This green color is the cup-shaped chloroplast. This helps the plant, the alga, to prepare its food. So the food is being prepared by this chloroplast. Okay. Then you can see the nucleus in the center. This is the nucleus in the cup-shaped center. This is the nucleus. It controls the whole cell. Okay. This is the mitochondria, helps in the process of respiration. Here at this place, here is basically contractile vacuole present, which help Chlamydomonas to excrete waste product out of its body. And here you can see pyrenoid. This is pyrenoid. The pyrenoid is made up of starch. Okay, it is made up of starch. So it is called starch factory. It makes starch for the Chlamydomonas, the food for the Chlamydomonas. So here it is stored basically. So whenever the chloroplast, this pigment, make the food, the extra food is going to be stored in the pyrenoid, and then this food can be used at the time of need, whenever Chlamydomonas need it. Okay, so this is the structure of Chlamydomonas. This diagram can be asked for 5 marks. It's a very easy diagram given in your book. You can see in the book the diagram is very simple. You have to draw that diagram and you will get 5 marks for that. The shape of diagram you can see is just like an oval shape, like an egg. Okay, so it's a simple diagram, not very much difficult. Now, if you have any question regarding the characteristics of alga and regarding the Chlamydomonas, you can ask. Anybody is having any question? सर क्लाइमेनोमस जो होता है वो तो फ्रेश वाटर में हम कर सकते हैं अपना वो, तो सर वो फिर पोल्यूट वाटर कहाँ से आ जाता है? फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है? फ्रेश वाटर मीन द वाटर which does not have salt. Okay, there are two kinds of water. One is called marine water, second is called fresh water. Marine water is basically the saline water, जिसको हम सी वाटर कहते हैं, और फ्रेश वाटर जो होता है ये आपका तमाम पानी जो लेक में, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, इन तमाम जगहों में होता है जिसमें सॉल्ट नहीं होता. पोल्यूटेड वाटर का मतलब ये है कि इसमें ऑर्गेनिक पोल्यूशन प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये यूज करते हैं अपने फूड के लिए. पायरानॉइड इज स्टार्च प्रोड्यूसिंग बॉडी. ठीक है, ये स्टार्च प्रोड्यूस करता है. मोटाइल का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. सो दो किस्म के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एक जो मूव नहीं कर सकते और दूसरे जो मूव कर सकते हैं. सो ऑर्गेनिज्म जो मूव कर सकते हैं वो मोटाइल कहलाते हैं, और ऑर्गेनिज्म जो मूव नहीं कर सकते उनको सीजाइल कहते हैं. बेटा, पैरानॉइड का मतलब है कि ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें स्टार्च स्टोर होता है. स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स से.
ठीक है, तो प्लांट्स का फूड यहाँ पर स्टोर होता है बेसिकली, द फूड ऑफ द प्लांट इज बीइंग स्टोर्ड ओवर हियर। फ्लैजिलम, फ्लैजिलम बेसिकली इनके टेंटिकल्स होते हैं जो जिसके थ्रू ये मूव कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, सो मूवमेंट के लिए ऑर्गन्स होते हैं इनके अंदर। नो, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डज नॉट मूव। सर हम एल्गा को अपनी नेकेड आईज से देख सकते हैं जब अगर ये बहुत सारे हो, लेट्स सपोज अगर इनकी तादाद बहुत ज्यादा हो ना, तो तुम आप इसको नेकेड आइज से, अगर ये यूनिसेलुलर हो और तादाद में ज्यादा हो तो आप नेकेड आइज से देख सकते हो। अगर बहुत सारे मिलियंस आप हो तो आप देख सकते हो। जो बड़े साइज में होते हैं ना, जो बड़े बड़े साइज के अंदर होते हैं, वो तो इजीली नेकेड आइज से नजर आते हैं क्योंकि वो तो बहुत बड़े होते हैं। आप अक्सर सर जाते मैंने हो पूछा था मूव करने, देख तो मैं भी हाँ, सकती हूँ सर। मूव करना आप देख सकते हो, ये कह रही हूँ। जी सर। इसकी मूवमेंट जो है बेसिकली वो फ्लोटिंग होती है, यानी अगर लेट्स सपोज इनको वाटर की जरूरत, इनको लाइट जो है ना, लाइट इनका सेंसिटिव वो है, इनके अंदर जो आई स्पॉट होती है वो लाइट को डिटेक्ट करती है, और ये मूवमेंट जो होती है ये फ्लोटिंग होती है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई चीज पानी के सरफेस पे तैर रही है, जैसे कोई प्लांट जो है वो पानी के सरफेस पे जा रही हो, तो इसका मूवमेंट लाइक दैट। इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट से कि आप उसको बैठ के जो देखती रहोगे और वो अपने फ्लैजिला से मूव कर रहे होंगे, आप इसके फ्लैजिला को नहीं देख सकते हो। मशरूम इज द लार्जेस्ट फंगस, नहीं जरूरी तो नहीं है मशरूम सबसे बड़ा हो, इससे बड़े बड़े भी हो सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? इज इट क्लियर? सर जी, सर आप एल्गा वापस एक्सप्लेन कर दें उसकी डेफिनेशन। अलगा देखें, अलगा जो है ये एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, एक वैरायटी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक तमाम ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। यानी सम ऑफ देम आर यूनिसेलुलर, अदर आर multicellular. Okay, so some of them are microscopic, other are very big in size. They all have chlorophyll in them, they can prepare their own food, so they are autotrophic in nature. Okay, and they can be classified on the basis of pigments present in their body. Like for example, some is having green pigment, other is having golden brown pigment, other is having red pigment. Okay, and the classification of alga, today into the stream of classification we have placed alga in kingdom Protoctista. तो सर जरूरी नहीं है कि क्लोरोफिल जो पिगमेंट होती है वो सिर्फ प्लांट्स में हो? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो अलगा में भी होता है, और क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, वो बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है, तो ओनली प्लांट्स में नहीं होता वो। सर क्वेश्चन करना है जी सर, जैसे पानी आपने कहा ना फ्रेश वाटर में होता है एल्गा, तो फ्रेश वाटर तो जैसे मतलब पानी जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो अगर जैसे हमें पानी में जो ग्रीन ब्लू कुछ नजर आ रहा होता है तो ये वही होता है? जी, ये अलगा होता है। ओके ठीक है, आप जो है स्ट्रीम्स पे जाए, चश्मे वगैरह पे चले जाएं, कहीं पर पानी कड़ा हुआ होता है उसमें भी आप देखते हो, सो लाइटिश ग्रीन कलर के उसमें वो सब्सटेंसेस क्रिएट हो जाती है, दैट ग्रीनिश कलर सब्सटेंसेस आर अलगा। ओके सर, थैंक यू। क्लियर? जितने भी थे मैंने सारे भेजे हुए हैं ना क्वेश्चन। अब क्या मसला हो गया, क्वेश्चन यार क्यों पूछ रही हो, आप ग्रुप में क्यों नहीं पूछते हो? अलगा जहां पर हो वो वाटर ड्रिंकेबल है या नहीं है? वेरी गुड क्वेश्चन कैन मोहम्मद रयान हैज आस्क्ड। It depends upon if the number of alga is very much high over there, definitely do not drink that water. Okay, because you can there can be contamination there. But if the quantity is less, there's a very less quantity, you can drink that water then. Okay, सर अगर कम क्वांटिटी में हो एल्गा तो? हाँ, तो आप पानी इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन यूज दैट वाटर, लेकिन इट्स गुड कि अवॉइड
ना पिए तो बेहतर है। Chlorophyll is a green color. Okay, chlorophyll mean green color pigment. So wherever it is, it will be green in color. Okay, so now we are moving to the next topic, the last topic of this chapter. सर Yes, सर एल्गा क्या कौन सा डिजीज क्रिएट करता है? अलगा कौन सा डिजीज क्रिएट करता है? अलगा की हमें देखो अभी तक कोई नॉन डिजीजेस तो ऐसे नहीं पता कि अलगा ये डिजीज हमें कॉज करता है, बट अलगा कैन कॉज कंटेमिनेशन, लाइक फॉर एग्जांपल इट कैन हेल्प आउट, लाइक फॉर एग्जांपल डायरिया हो गया, कोलेरा हो गया, उनमें हेल्प आउट कर सकता है। इसकी ऐसी कोई डिजीजेस हमें नहीं पता कि अलगा बजाते खुद कौन सी डिजीजेस कॉज करता है, बट इट कैन हेल्प आउट एनी अदर ऑर्गेनिज्म कि वो उस चीज को एनहांस करे, तो कंटेमिनेशन को एनहांस करेगा और उससे फिर जो है प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। सम अलगा आर आल्सो इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं है कि उससे कंटेमिनेशन ही कॉज करेंगे, कुछ अलगा जरूरी होती है क्योंकि वो बहुत सारी चीजों में लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, ठीक है, तो वाटर के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन को अलगा जो है वो फिक्स करके रखता है। So some are helpful as well, and it can cause some of the differences. Like for example, some of the diseases can be caused with the help of any other organism. इस बजाते खुद इसकी डिजीज नहीं, लेकिन किसी और ऑर्गेनिज्म से वो हो सकती है, ठीक है। अभी आप जब अगर समंदर पे चले जाते हो तो वहां पर जो समंदर के पानी का लेवल जब नीचे चला जाता है तो वहां जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, उन रॉक्स में आप देखते हो ये ग्रीनिश कलर के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, वो ग्रीनिश कलर के सब्सटेंसेस जो है वो अलगा होता है, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ अलगा आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द सी लेवल, ऑन द स्ट्रीम लेवल्स, यू कैन सी देम डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, बहुत सारी जगहों में आप इनको देख सकते हो, ठीक है जी। लेट्स डिस्कस द लास्ट टॉपिक। सर यस सर, पानी तो खराब नहीं होता तो उसके ऊपर ये फंगस अलगा कैसे लग जाती है? पानी खराब नहीं होता, ठीक है, अलगा जो है वो वहां पर ग्रो करता है, वो उसकी हैबिटेट है, जैसे आपकी हैबिटेट है, आप घर पे रहते हो, ठीक है, सिमिलरली वो उनका घर है, उनका हैबिटेट है, वो वहां पर ग्रो करेगा, उनकी ग्रोथ की प्लेस वही है। सर तो अलगा पानी के ऊपर थोड़ी होता है, पानी के नीचे होता है ना, जो उसके सरफेस ऊपर भी होता है, ऊपर भी होता है और फ्लोट भी कर रहा होता है, ठीक है, और नीचे भी प्रेजेंट होता है, बोथ द वे इट कैन बी प्रेजेंट, ठीक है। अभी मैं स्पायरोगायरा का हम पढ़ेंगे ना, तो स्पायरोगायरा जो है ये फ्लोट कर रहा होता है, सरफेस पे फ्लोट करता है। अगर आप बड़े बड़े अलगा की बात करोगे तो वो डाउनवर्ड प्रेजेंट होंगे, यानी पानी के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो अ लॉट ऑफ देम फ्लोट ऑन द सरफेस, बहुत सारे क्या करते हैं सरफेस पे फ्लोट कर रहे होते हैं, और ठीक है? सर अगर क्लोरीन डाला जाए पानी में तब भी वो ग्रो होंगे? बेटा ये क्लोरीन के साथ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो हैबिटेट है उनका, ये अपने हैबिटेट में ग्रो करेगा, ठीक है। सो ये हर जगह में नहीं ग्रो कर रहा होता, स्पेशली ये उन जगह में ज्यादा ग्रो करता है जहां पर स्टेगनेंट वाटर हो, पानी कड़ा हो एक जगह पे, तो वहां पर ये नॉर्मली बहुत ज्यादा ग्रो करता है, ठीक है। या जो है नॉर्मली आप इनको देखोगे कि ये जो सपोज कोई रिवर है या कोई स्ट्रीम है, तो उस स्ट्रीम में से जो पानी निकलता है, जो आगे पानी जा रहा होता है, उसके साइडों पे या उसके सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है, तो वो पानी डेफिनेटली आप पी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप उससे आप बीमार हो जाओगे या कुछ, लेकिन उसमें अगर कोई और कंटेमिनेशन नहीं है तो कंटेमिनेशन का हमें तो नहीं पता चलता कि इस वाटर में कंटेमिनेशन है या नहीं है, तो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, दैट इज द थिंग, ठीक है। नाउ शुड वी मूव टू द नेक्स्ट नाउ? यस सर। Okay. Now the last topic is Spirogyra. Okay, Spirogyra is basically again freshwater alga. ये भी fresh water में present होता है, and it can be found the habitat or basically the slow running streams and stagnant water. So the water which is stagnant and which is slow running, it will be found floating on them, floating on its surface. So the green color floating on its surface are normally the Spirogyra. Okay, they are attached to substratum. Substratum means they are attached with something else, okay, they are not present on its own, they will be present with rocks, okay, or they will be present with some kind of support. The support is known as substratum, okay, with the help of rhizoidal cell. Rhizoidal cell are basically the root like structure, they are not root,
but they are root-like structures, and those root-like structures are known as holdfast. With the help of the holdfast, the Spirogyra will be attached with the rock. Okay, certain rocks will be present or anything else will be present. With that, the Spirogyra will attach itself. So ये freely float नहीं कर रहा होगा like Chlamydomonas. Chlamydomonas freely float करता है, लेकिन Spirogyra जो है वो freely float नहीं करता. It will be attached with some other thing, with some substratum, with some kind of support, and with the help of its holdfast. So holdfast are basically its root-like structures with the help of which they can attach themselves to the substratum. They are also unicellular, but they are colonial. Okay, and the colony is known as filament. Filament mean they will be having a large group. Okay, they will be just like present in chain structure. Filament mean a chain structure, so the colony will be a chain structure. Chlamydomonas live single. Okay, Chlamydomonas do not have a colony, they live single. So all of them live single, but Spirogyra have a colony. They do not live single. A lot of cells combine together and they live together in a filament, in a colony. Their filaments are unbranched. Okay, the filament or the chains are unbranched. There is no branches present in them, and all of the cells, all cells are same. Okay, so 1, 2, 3, 10, 100,000 or 10,000. How many cells are there? They all are same. Okay, cells are much longer but not much broader. So they are longer in shape, but they are not broader. Okay, they are not broad in shape. And the cell contain a cell wall, okay, a cell membrane, a cytoplasm, and its chloroplast is ribbon shape. Okay, in Chlamydomonas, the chloroplast was cup shape. In Spirogyra, the chloroplast is ribbon shape. It has a nucleus and it has a pyrenoid present in them. Let's see the diagram. This is the diagram. Now you can see there are multiple cells, but we have taken a single cell out of it. Okay. Now in front of you there is a single cell, so there will be larger colonies present. In the larger colonies, we have taken a single structure out of it. Now you can see there is a cell wall present, a mucilage extra layer is present, the cell membrane is present. You can see that the cytoplasm is suspended in the nucleus is suspended in the cytoplasm. Okay, it is suspended by the help of cytoplasmic strands. So its cytoplasm is different from the cytoplasm of Chlamydomonas. And then you can see the ribbon-like strips. That ribbon-like strips are known as its chloroplast. Okay, and inside the chloroplast you can see the pyrenoids. The pyrenoids are present inside the chloroplast. So this is basically the structure of Spirogyra. The Spirogyra is again a filamentous structure having large filaments in it. Okay, it has a cell wall, a cell membrane present, a cytoplasm is present, which is suspended cytoplasm. The nucleus is present within the suspended cytoplasm. The chloroplast is a ribbon-like structure, and inside the chloroplast, pyrenoid is present. That pyrenoid help them in the, you can say, the storage of the food. So chloroplast normally make the food. The excessive food is stored in the pyrenoid in the shape of starch, and then at the time of need, that food can be used by the plant. Is it clear? Come back to the question answer session. If there is any question now, you can ask right now. Mucilage is basically an extra protective layer that is made up of carbohydrates. Sir, what is the cytoplasm strand? Cytoplasm strand means strips. Strand means strip. Okay, so you see ना कि इसका cytoplasm जो है वो complete नहीं है, बल्कि वो उसमें है, पट्टू की तरह है, strips में है. आरिशा सिर्फ आपको ही मसला आ रहा है या सबको आ रहा है? नो सर, आपकी आवाज क्लियर है. यस सर, आपकी आवाज क्लियर है. आरिशा को क्यों मसला आ रहा है? आरिशा, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा या आपने आवाज अपनी मोबाइल की आवाज स्लो कर दी होगी या लैपटॉप की. चेक इट डाउन. साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड, अभी मैंने बताया ना, स्ट्रैंड्स का मतलब होता है कि ये पट्टे, स्ट्रिप्स. सो साइटोप्लाज्म कंप्लीट नहीं होता, वो स्ट्रिप्स में होता है. Pyrenoid is basically the starch storing body.
The starch are stored in the pyrenoid. Any other question? MashaAllah. Spirogyra is an example of Chlamydomonas, ना? Sorry, Chlamydomonas नहीं, alga. Alga की example है. Filamentous होता है और unicellular होता है. यही तो हमने डिस्कस किया अभी. फिलामेंट का मतलब होता है चेन. ओके, फिलामेंट मीन चेन.